Today the topic is electric field intensity on the equatorial line of electric dipole. We will consider an electric dipole, that is, this is electric dipole consisting of charge minus q and plus q. This minus q is at point A and this plus q is at point B. And O be the center point of this dipole. ठीक है? The length of dipole is 2a. अब देखो, we have to calculate the electric field intensity on the equatorial line, on the equatorial point, means that the point is on the above of electric dipole. Let me consider at the center, this is the point P, where we have to calculate the electric field intensity due to dipole A and B. Let me consider the minus q charge will affect the P point with an electric field of E1. This is E1, this is E1, and the electric field intensity at point P due to plus charge, that is this, in this direction, because it gives electric field line. अब मैंने कंसिडर किया है E1 be the electric field intensity at point P due to minus q charge and E2 be the electric field intensity at point P due to plus q charge. The direction of E2 will be along PC and the direction of E1 will be along PA. जो ये E1 है, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, it makes us angle theta. It also makes us the angle theta. ठीक है? This electric field line makes angle theta and this also electric field line makes angle theta with the electric dipole. Let me draw a perpendicular or a line which divides the electric dipole into two parts, that is at the center. Let me resolve this electric field into two components, because when an electric field makes any angle, that electric field or that component or that vector has two components. एक होता है sin component, दूसरा होता है cos theta. ठीक है? The components of E1 are, one will be along this direction and one will be along this direction. This is vertical component of E1, this is horizontal component of E1, that is, this is E1 sin theta and this is E1 cos theta. जो E2 है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट ये सेंटर में, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा. दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज E2 sin theta and E2 cos theta. This E1 and E2, E1 sin theta, E2 sin theta will cancel. E1 sin theta and E2 sin theta will cancel because they are opposite, and also E1 is equal to E2 because in an electric dipole the charges are same, opposite direction, but magnitude have same. The charges have same magnitude, that is why E1 is equal to E2. So that's why E1 sin theta is in upward direction and E2 sin theta is upward direction and E1 sin theta is in downward direction. That is, they are opposite. When two vectors are in opposite direction, they cancel each other. So we can write that let E1 be the electric field intensity at point P due to minus q charge along PA. ठीक, और resolve E1 into two components. E1 cos theta along PD है ना, and E1 sin theta along P, इसका नाम लिखेंगे O, यहाँ O, PO. ठीक है? Similarly, let E2 be the
electric field intensity at point P due to plus Q charge along PC along PC, ठीक है। रिजॉल्व E2 into 2 components। एक है E2 sin थीटा along, इसका नाम रखेंगे सी डी एफ, ठीक है, along PF and E2 cos theta along PD। Therefore, two components cancel each other, E1 sin theta and E2 sin theta. Therefore, resultant electric field intensity E at point P is given by E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। E1 cos theta is due to charge minus Q and E2 cos theta is due to charge plus Q। Since E1 is equal to E2, E1 is equal to, therefore E is equal to 2 E1 cos of theta। हम ऐसे भी लिख सकते हैं E is equal to 2, what is E1? 1 divided by 4 pi epsilon naught charge divided by distance। E1 distance means that is that तक होता है AP का स्क्वायर into cos of theta। हमारे पास रिलेशन आ गई E is equal to 2 divided by 4 pi epsilon naught into Q, 2Q divided by 4 pi epsilon naught into 1 divided by AP का स्क्वायर into cos of थीटा, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AP का स्क्वायर इन ट्रायंगल POA। दिस इज हाइपोटेन्यूज, AP इज हाइपोटेन्यूज, AO इज बेस, PO इज परपेंडिकुलर। और जो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे लिए हैं दैट इज R, और जो यहां पे डिस्टेंस है A से O तक दैट इज A। वी हैव टू फाइंड AP, दैट इज AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, दैट इज AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस OP माइनस R स्क्वायर। AP स्क्वायर निकल गया, ठीक है, AP स्क्वायर निकल। अब निकालना है cos ऑफ थीटा। cos थीटा इसी ट्रायंगल में हम निकालेंगे, किस ट्रायंगल में? POA। cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर है? A, दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? दिस इज AP A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल रेज पावर 1/2। और यहां भी लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। फिर हमने निकाला cos थीटा इज इक्वल बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस क्या है? A और हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल रेज पावर 1/2, ठीक है। पुट दीज वैल्यू cos थीटा एंड AP का स्क्वायर इन दिस फार्मूला, इन फार्मूला फर्स्ट we get put AP का स्क्वायर and cos theta in equation first, we get E is equal to 2Q by
4 pi epsilon naught into 1 divided by AP का square, that is AP square, that is A square plus R square into AP नहीं, AP का स्क्वायर में A square plus R square. cos थीटा किसके बराबर है? A डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रेज पावर 1/2. ठीक है, अब देखो E किसके बराबर आएगा, दैट इज ये 2Q इंटू 1 इंटू ए, दैट इज 2AQ. 2AQ किसके बराबर होता है? 2A इंटू क्यू P के बराबर होता है. ठीक है, दैट इज P डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रेज पावर 1 into a square plus r square का whole raised power 1/2. That is a square plus r square का whole raised power 3/2. Because bases are same, power should be added. That is 1 plus 1/2. That is 3/2. This is the required electric field at point P. Special case. If two A into Q is equal to P, if A is less than R. This was all about the electric field intensity on the equatorial line of electric dipole.